Welcome you all, students. Today we are going to learn about diachronic and synchronic approaches in linguistics. We are going to talk about its differences. This topic is actually some fundamental distinctions in linguistics. This is our lecture number 7. We already have conducted 6 lectures in this lecture series program. This topic is from Linguistics, Part 1, English Code 102. So those students who have been learning in this semester, they may follow this lecture series program. Here we are going to talk about that these are actually two approaches in linguistics to study of language, and those are as synchronic linguistics and diachronic linguistics. Very interestingly, if we talk about these two terms, Ferdinand de Saussure is the person who introduced these two terms. In Saussure's time, approached the problem of multiplicity of languages by trying to trace each of them back to a handful of common sources. This approach was deemed diachronic by Saussure because it looks for the production of difference across time. यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर के टाइम में हो चुकी थी, और अब लोग बहुत ज़्यादा जो है वो क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेसेस को फॉलो करते थे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सॉफ्टवेयर के वक्त में, जिन्होंने जो है वो इस अप्रोच को यानी अप्रोच टू स्टडी और हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने कहा ये जो है वो स्टडी डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहलाएगी. Here is something more, but for Saussure, this ignored the problem of how to account for the existence and operation of language itself. यानी एक और बड़ा मसला कि भाई एग्जिस्टेंस जो लैंग्वेज की है इस वक्त, इसको ज़्यादातर फोकस नहीं किया जाता था. तो इन्होंने keeping in view this problem, actually, synchronic linguistics is one of the two main temporal dimensions of language study introduced by Saussure in his course in general linguistics in 1916. तो एक बुक में कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916 में सॉसियर ने फिर सिंक्रोनिक अप्रोच इन लिंग्विस्टिक्स जो है वो दी, इंट्रोड्यूस करवाई, और इसका मकसद यही था कि लैंग्वेज को इस वक्त स्टडी करना कि इन एट प्रेजेंट टाइम व्हाट इज द शेप और हाउ लैंग्वेज इज बीन यूज्ड. Let's begin and talk about these terms one by one. So here is synchronic linguistics. As it is described into this picture, it is a study of language at a given time. यानी इस वक्त लैंग्वेज की स्टडी करना, यानी जैसी भी शेप लैंग्वेज की इस वक्त है इसको स्टडी करना, दैट इज नोन एज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. This approach sees the language as a living whole, existing as a state at one particular time. The changes which are taking place in material are considered irrelevant to main focus of the study. यानी लैंग्वेज को समझना कि ये एक स्टेट है, लिविंग होल है, जिंदा कोई चीज़ है, और हम उसको वैसे ही लेते हैं जैसे वो है, जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है. जैसे एक टर्म जो है वो आजकल पाकिस्तान में यूज़ हो रही है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो ये जो है वो इस वक्त किसी और सेंस में यूज़ होती है, यानी कोई चीज़ ख़राब हो गई, जो प्लान था वो ख़राब हो गया, बट previously it was having a different concept. So this is known as, इसको जिस तरह से आज यूज किया जा रहा है, that is known as synchronic linguistics. It is descriptive study of language, यानी जिस तरह से भी लैंग्वेज की शेप है, जैसे भी ये यूज हो रही है वैसे ही हम इसको स्टडी करें, that is known as descriptive study of language or approach. uh, Also it is known as synchronic linguistics or synchronic approach in linguistics. Here we are going to refer another approach in linguistics that is known as diachronic linguistics, as it is there into the picture. The origins of language, mean to say when we study the origins of language, the diachronic approach traces the historical development of the language and records the changes that have taken place in it between two ages or times. यानी डायक्रोनिक अप्रोच में हम स्टडी कर रहे होते हैं कि हिस्टोरिकली लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट हुई है, यानी ओल्डन टाइम्स में लैंग्वेज कैसी थी और इस वक्त लैंग्वेज कैसी है. दस इट इज़ historical study of language according to Lyons in 1983 page 35. कि historical study जो है वो लैंग्वेज की करना, that is known as diachronic approach in linguistics. It investigates language changes as they have occurred from time to time and the evolution of changes. So what are the changes or evolutionary change in language that is a part of diachronic approach in linguistics.
Here, once again, we are referring to Saussure. Saussure in 1916, who made this distinction, gives priority in linguistics to the synchronic approach and observes that the two approaches must be kept separate. So, according to him, that synchronic and diachronic linguistics are approaches are to be kept separate, and he preferred that synchronic approach because synchronic approach के अंदर हम लैंग्वेज की स्टडी कर रहे होते हैं और लैंग्वेज सीखने के दौरान हमें ज़्यादातर सिंक्रोनिक अप्रोच जो है वो काम आती है, यानी लैंग्वेज जैसे यूज़ हो रही है वैसे ही इसको यूज़ कर रहा. This definition of diachronic approach in linguistics is taken from Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. And according to this dictionary or book, an approach to linguistics which studies how languages change over time. यानी वक्त के साथ लैंग्वेजेस कैसे चेंज होती हैं. फॉर एग्जांपल द चेंज इन द साउंड सिस्टम ऑफ रोमन लैंग्वेजेस फ्रॉम देयर रूट्स इन लैटिन, यानी लैटिन में से जो रोमन लैंग्वेज निकली है इसके साउंड सिस्टम की स्टडी करना, हिस्टोरिकली ट्रेसेस इसके ढूंढना. And other languages to modern times are the study of changes between early English to modern British English. या दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश है, इसकी अर्ली शेप कैसी थी. So this study, or the historical study of language, is known as diachronic linguistics. Here, the origin of the term goodbye. This is actually an example for diachronic linguistics, that how and what is diachronic, और historical study जो है वो कैसे कर रहे होते हैं. एक example है goodbye की. So this is the detail, our traces of the word goodbye. Goodbye comes from the words God be with ye. The first documented use of the goodbye appeared in a later English writer, a scholar, Gabriel Harvey, wrote in 1573. तो सबसे पहले ये word God by with ye जो है goodbye लिखा था इस shape में Gabriel Harvey ने in 1573. As time went on, it is believed the phrase was influenced by terms like good day and good evening, transitioning then from God be with ye to God by, and finally ending in today's blessing of goodbye. तो ये word जो है वो ऐसा ऐसा इसकी transition होती गई और good day के तौर पे use किया गया, good evening के तौर पे use किया, and now it is into the shape of goodbye. So this is actually the historical traces of goodbye, which is known as diachronic linguistics. In olden times, this was the practice that people used to study language through these traces. But Saussure objected, and he said no, language should be studied as it is there today. And this approach is known as synchronic linguistics. Here is another example, and this time it is the origin of the term okay. Actually, the very first time this word was used in Boston Morning Post, historically it was a sarcastic word. Sarcastic का मतलब है तंजिया, कोई चीज़ यूज़ होना. तो ओके सबसे पहले जो है वो आप देखें, ये बोस्टन पोस्ट की एक मैंने पिक्चर भी दी हुई है. सबसे पहले जैसे यूज़ हुआ था वर्ड ऑल करेक्ट यूज़ हुआ था, इसके बाद ये ओके हो गया और ये तंजिया यूज़ हुआ था पहली बार, यानी तंज के तौर पे कि भाई ओके का मतलब ये है कि कोई चीज़ बस ठीक ही है या ठीक नहीं है. मगर टुडे it is used okay as mean to say everything is right. So the very first time Boston Morning Post in 1839 stood the abbreviation okay next to the words all correct. So this is another example of diachronic linguistics, our approaches. Thanks for attention. Thank you very much. Hopefully this would have been very helping for all of you. Assalamu alaikum.